पूरे इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसपास के ममालिक उनके तुलबा की जो है तुम लोग मेज़बान हो, समझ गए यानी। तो इस बात की भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जिन्होंने वक्त नहीं लगाया है वो 4 महीने लगाकर इस काम को सीख ले, और जिन्होंने 4 महीने लगाया है वो इस काम को अपना ज़िंदगी का मकसद बनाए, साल के लिए 7 महीने के लिए जो भी तरतीब है उसके लिए जो है वो खड़े हुए। Ini terakhir beliau katakan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya antum-antum semua yang ada di Temboro dan sekitar Temboro ini harus banyak-banyak bersyukur. Karena berkat keikhlasan ayah dan kakeknya Ki Ubaidillah, ya, Kiai Mahmud dan Haji Siddiq yang telah memulai usaha agama di Kampung Temboro ini, memulai usaha ilmu, usaha zikir di kampung ini dengan sangat ikhlas, maka hasilnya telah tampak di hadapan semua kita hari ini. Begitu saya masuk ke kampung ini, ya, jadi beliau katakan Syekh Ubaidillah ini tempat sekelas beliau. Ketika mondok di Pakistan, sekelas bareng-bareng, satu angkatan lulus bareng, dan sekarang baru ada kesempatan untuk bersilaturahmi mengunjungi ke sini. Tapi begitu masuk pertama Kampung Temboro, saya cuma punya 2 pilihan. Ini saya sedang berada di Afghanistan atau sedang berada di Pakistan. Begitu hidup amalan sunnah di sini, semua orangnya pakai peci, pakai sorban, pakai jenggot, pakai jubah, pakai kurta. Perempuannya tutup aurat sempurna, pakai niqab, pakai burda. Ini saya sama sekali tidak merasakan sedang berada di Indonesia. Maka semua yang sudah ada ini harus dijaga, harus disyukuri. Kalau enggak, Allah Subhanahu wa taala akan cabut semua ini. Harus betul-betul dijaga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hati-hati. Udah bagus Allah kasih keadaan yang seperti ini, sangat menjaga untuk anak-anak kita tumbuh dan besar dalam keadaan seperti ini. Ini adalah nikmat yang besar. Kalau kita nggak jaga, na'udzubillah subhanallah, bisa Allah hilangkan lagi. Ya. Bagaimana cara menjaganya? Dengan menjadikan anak-anak kita hafid-hafid Al-Quran dan alim-alim ilmu agama. Insya Allah. Beliau katakan fadilahnya orang hafid Al-Quran. Beliau sebutkan suatu hadis, barang siapa yang belajar Al-Quran, kemudian yang halal di Al-Quran dia halalkan, yang haram di Al-Quran dia haramkan, kemudian dia amalkan semuanya isinya, maka dia akan masuk surga dan akan membawa 10 orang dari keluarganya yang aslinya udah wajib masuk neraka ke dalam surga bersamanya. Maka yang belum ada di rumahnya hafid Quran segera dibuat, segera diwujudkan. Ya, yang sudah ada lanjutkan lagi dengan alimnya, karena beliau sebutkan ayat-ayat Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan tidak? Allah banyak tempat puji-puji, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanya yang bisa takut kepada Allah mendengar sungguh-sungguh adalah para ulama. Maka yang sudah ada hafid belum alim harus diwujudkan alimnya. Yang sudah hafid alim ditambah lagi, dibanyakan lagi. Inilah cara kita mensyukuri nikmat Allah untuk Kampung Temboro dan sekitarnya ini. Insya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang juga dua-duanya jadikan kerja ini sebagai kerja kita dan syukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ini. Insya Allah. Maka silahkan yang ingin mendaftarkan namanya 4 bulan. Ya, negeri jauh, 4 bulan dalam negeri, 4 bulan jalan kaki, silakan catatkan namanya. Yang pertama jamaah 1 tahun, silakan. 1 tahun. Jamaah 1 tahun. Yang niat 1 tahun dan sedang berangkat 1 tahun, silakan. Berdiri. Monggo. Niat dulu. 1 tahun. Ayo. 1 tahun. Masya Allah. Sisa masa, tambah masa berdiri. Silakan 1 tahun. Monggo. Catat bulan. 1 tahun. Nanti keberangkatannya kita musyawarahkan. 1 tahun. 1 tahun. Kemudian jamaah negeri jauh dan IPP, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna sayyidana wa mawlana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi bashiran wa nadhira. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Allah ta'ala fil kalamil majid fi maqamin akhar wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. और कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान मुहतरम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की फ़ज़ल से इस अज़ीम और बाबरकत महफ़िल में मैंने शिरकत किया। ये मेरे लिए सआदत की बात है और अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत वाला काम ये पूरे आलम के अंदर माशाअल्लाह ऐसे हो रहा है कि पूरे जितने ममालिक हैं किसी मुल्क में कोई रुकावट नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस वक़्त ये तौहीद की दावत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक शुरू हुई तो इसमें हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने बड़े तकालीफ बर्दाश्त किए हैं। मुख्तलिफ अंबिया ने मुख्तलिफ औकात में गोया कि अपने उम्मत को इस दावत की तरफ बुलाया, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की दावत दी और उनको बुलाया। जिन्होंने वक्त की नबी की बात को माना वो कामयाब हो गए और जिन्होंने वक्त की नबी की बात को ठुकराया वो हमेशा हमेशा के लिए नाकाम। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, इस पुरफितन दौर में सबसे बड़ी खुशकिस्मती उस शख्स के लिए है जिसने अपने जान माल वक्त निकाल करके अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में निकला। इसलिए कि ये वो सआदत है जो अंबिया का रास्ता है और अंबिया में से सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। और इसी दावत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे फिज़ा बनाया है कि हर घर के अंदर हाफिज़, हर घर के अंदर आलिम और अल्लाह तबारक व तआला इस दावत की बरकत से ऐसे ऐसे गुमराह लोगों को हिदायत अता फरमाए। Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengucapkan salam salawat, beliau menyebutkan dua ayat Al-Quran tentang fadilahnya berdakwah dan menyebutkan hadis Rasulullah SAW juga fadilahnya berdakwah. Kemudian beliau mengatakan, wahai teman-temanku semuanya, sudah menjadi kebahagiaan
dan keuntungan yang besar dalam saya bisa datang ke sini, datang ke Indonesia, datang ke Temboro, dan bisa bertemu dengan kalian semua. Ini adalah suatu kebanggaan bagi saya. Ini adalah suatu kebahagiaan yang sangat besar bagi saya. Apalagi kalau sekarang berada di tempat di mana hidupkan usaha Allah, usaha pabrik yang sudah sangat jelas barokahnya di seluruh dunia. Beliau katakan tidak ada satu negara pun yang di situ hidup usaha dakwah kecuali sudah tampak buktinya dengan nyata dan jelas. Sudah tampak keberkahannya dengan nyata dan jelas. Beliau katakan kenapa bisa seperti itu? Karena usaha dakwah ini adalah usaha mengajak umat untuk tauhid, untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang benar. Dan ini adalah kerjanya para nabi dan para rasul. Dari mulai Nabi Adam alaihi wassalam sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua ajakannya sama, mengajak umat untuk bertauhid, mengajak umat untuk beriman, mengajak umat untuk memiliki keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kerja ini, usaha ini fokus mengajak umat kepada iman, kepada tauhid, maka pertolongan yang Allah berikan kepada para nabi terdahulu akan diberikan juga kepada umat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat semua barokah-barokah yang jelas. Di antaranya adalah hampir semua rumah-rumah sekarang pejuang agama, usaha agama ini sudah ada hafidh Al-Quran di rumah-rumah. Bandingkan dengan dahulu sebelum ada usaha ini sangat jarang kita temukan hafidh-hafidh. Sekarang semakin setiap rumah sudah ada hafidh. Barokah apa yang lebih nampak dan jelas lagi dari ini? Kalau kurang lagi beliau katakan berapa banyak orang-orang yang rusak dan jauh dari Allah di luar sana sekarang menjadi terdepan dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebagian bukti keberkahan usaha ini, usaha perjuangan ini, usaha mengajak umat kepada iman dan tauhid ini. Maka kita semuanya yang hadir di sini harus menyiapkan korban, waktu, amal dan diri kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. मेरे अजीज दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। 950 साल, ये जुबान मिलाना तो बिल्कुल आसान काम है, लेकिन अगर देखा जाए कोई आदमी 1 साल भी ये दावत वाला काम करे तो उसको कितने परेशानियों और कितनी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। कभी बच्चा बीमार, कभी बीवी बीमार, और कभी जो है कारोबार के हवाले से परेशानियाँ। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत वाला काम जारी रखा। आप सुबह भी गए हैं, शाम को भी दावत भी गए हैं, किसी ने माना और किसी ने नहीं माना, और इतनी बड़ी उम्र में 82-83 लोगों ने ईमान लाया। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि बस इसे खत्म, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम ने बराबर कोशिश जारी रखा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम की नाफरमानी की वजह से, जो नाफरमान कौम थे, अल्लाह की वहदानियत के मुनकर थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप कश्ती बनाए। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और उसमें जितने भी फरमानबरदार लोग हैं उनको सवार कराया, और जितने जानवर हैं उसमें से गोया के मुज़क्कर और मादा को वो उसमें सवार कराया, और फरमानबरदार लोग सब कश्ती में बैठ गए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को हुक्म दिया, ए ज़मीन पानी निकाल दे। आसमान को हुक्म दिया, ए आसमान पानी बरसा। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, फरमानबरदार लोग तो कश्ती में बच गए,
जो नाफरमान लोग हैं वो बिल्कुल तूफान के अंदर गर्क हो गए। यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान, नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, हाम, साम, याफस और किनान। ये किनान ये नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाने वाला नहीं था। तो जब ये गर्क होने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला से नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज़ किया, फरियाद किया, ए परवरदिगार ये तो मेरा बेटा है और आपने मेरे अहल की निजात का वादा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ए नूह आपके अमल से नहीं है, इसलिए कि इसका अमल सालिह नहीं है, ये नाफरमान है और ये नाफरमान लोगों के साथ गर्क हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी गर्क कर दिया, जो नाफरमान लोग थे उन सबको गर्क कर दिया और ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने निजात अता फरमाया। तो इसीलिए जो नाफरमान लोग हैं उनका तो वही होता है कि अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ हो जाते हैं। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menceritakan tentang kisahnya Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh ini menjalankan usaha dakwah, mengajak umat kepada Allah, kepada tauhid, kepada iman yang benar, bukan setahun 2 tahun, bukan 10 tahun 20 tahun, tapi 950 tahun. Beliau katakan diucapkan 950 itu sangat mudah, tapi ketika dijalani, jangankan 950, para ulama yang keluar 1 tahun pun sangat berat menjalani. Pasti akan datang berbagai macam ujian dan cobaan dalam masa 1 tahun tersebut. Ada istri sakit, ada anak sakit, ada dirinya sendiri yang sakit, ada orang tempatan yang sakit melihat kedatangan jemaah tersebut. Banyak cobaan ujian, padahal itu hanya baru setahun. Bagaimana dengan 950 tahun? Siang, malam, sore, pagi, terus berdakwah. Nabi Nuh alaihissalam, bahkan dengan umur yang semakin tua dan dengan waktu semakin lama, 950 tahun terlewati. Jumlah tazkirah kes, satu riwayat 82, satu riwayat 83. Kalau kita menjadi Nabi Nuh, pasti kita sudah bilang masa sudah habis waktu. Tapi Nabi Nuh tidak ada waktu, terus dapat tazkirah selagi Allah perintahkan berjuang, terus berjuang, mengajak umat kepada iman, terus dapat tazkirah tinggi 950 dibagi 83. Itu enggak setahun tidak dapat satu anak, mungkin 10 tahun satu baru dapat. Maka begitu sudah selesai perjuangan Nabi Nuh alaihissalam mengajak umat yang tak mau beriman kepada Allah, akhirnya Allah perintahkan Nabi Nuh, buatlah perahu. Buat perahu yang besar. Semua sekian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diajak masuk ke dalam perahu tersebut. Kemudian dikatakan satu pasang-pasang, ya, jantan dan betina semua juga dimasukkan ke dalam kapal tersebut. Ketika semua orang yang beriman telah masuk, hewan-hewan satu pasang telah masuk, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada bumi, ya bumi, keluarkan semua isi air bumi, dan diperintahkan kepada langit, jatuhkan seluruh air bumi. Maka bumi tertutup air secara keseluruhan. Yang selamat hanya orang-orang yang beriman